Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, what is hyperconjugation effect? How does it differ from resonance effect? Briefly discuss the significance of hyperconjugation effect. All right. So here the key concept is electronic effects. So यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में बात की जा रही है, those are hyperconjugation and resonance. So hyperconjugation में क्या होता है? This is the delocalization of sigma electron pair of hydrogen and carbon, which is adjacent to a pi bond or a p orbital. So अगर कोई CH सिग्मा बॉन्ड किसी pi बॉन्ड और p ऑर्बिटल के एडजेसेंट कार्बन में प्रेजेंट है, then that CH सिग्मा बॉन्ड can undergo delocalization and उसको hyperconjugation बोला जाता है. For example, we can look at this. We have C, H, H and H, then single bond CH, double bond CH2. यहाँ पर ये जो CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये delocalize हो सकती है by shifting to carbon. Then we will get this structure CH2 minus, then CH double bond CH2, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो सकती है and this pi bond can shift over here, and ये H plus यहाँ पर ही present है, and then further we will get another structure which is like this: CH2 double bond CH single bond CH2 minus. So as we can see, ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में सिर्फ रेजोनेंस है और यहाँ पर H plus present है, but this is not bonded to any of the carbon atoms. So hyperconjugation is also called no bond resonance, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, बट स्टिल ये जो अनायन है इनमें इसमें रेजोनेंस हो रहा है. So this is also called no bond resonance. Now let us talk about resonance. Resonance में क्या होता है? This is the shifting of or delocalization of pi electron density over a range of conjugated p orbitals. So अगर एक रेंज में p ऑर्बिटल्स कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है और उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, देन वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज हो सकती है ओवर दैट रेंज, एंड दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस. फॉर एग्जांपल वी कैन लुक एट दिस. ये एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन है. सो इसमें ये जो पाई बॉन्ड है, फर्स्ट पाई बॉन्ड, दिस कैन अंडरगो क्लीवेज. सो ये यहाँ पर शिफ्ट हो सकती है एंड देन वी विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है. सो यहाँ पर जो दूसरा पाई बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, सो दैट वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर. ये पाई बॉन्ड इधर प्रेजेंट है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज. एंड इन द अदर वे अगर हम देखें, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ये अगर दूसरे कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाए, देन वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर. यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, एंड यहाँ पर पाई बॉन्ड था
then this negative charge can come over here and this pi bond can shift and we will get this structure. Here positive charge and here negative charge और बीच में pi bond. Also अगर हम aromatic system को consider करें या फिर pi bonded organic compounds को consider करें, so इसमें pi bonds conjugation में present है. So this pi bond can shift over here, this pi bond can shift over here, and this pi bond can shift over here, and we will get another structure like this. Pi bond, and pi bond. So these two are resonating structures. So इसी को resonance कहा जाता है. Now let us discuss about the significance of hyperconjugation effect. So first thing, it leads to the stability of organic intermediates. Stability of organic intermediates. So ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स में सिर्फ दो इंटरमीडिएट्स को ये स्टेबलाइज करता है, विच आर कार्बोकैटायंस एंड फ्री रेडिकल्स. सो कार्बोकैटायन में क्या होता है, लेट अस से वी हैव अ कार्बोकैटायन लाइक दिस CH3 CH2 पॉजिटिव. यहाँ पर एक p ऑर्बिटल प्रेजेंट है विच इज वैकेंट, सो वी हैव अ p ऑर्बिटल लाइक दिस CH एंड H, एंड यहाँ पर एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है और इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. सो यहाँ पर CH3 में जो सिग्मा CH bond है, that will shift on carbon atom so that we will get a structure like this. CH2 negative single bond, CH2 positive, and यहाँ पर p orbital present है, and along with this we have this H plus, क्योंकि ये bond pair इधर shift हुई है, हाइड्रोजन के पास कोई electron pair नहीं है. And then this negative charge can donate its electron to the p orbital. So p orbital को donate करने से क्या होगा, यहाँ पर एक pi bond form होगा. So we will get CH2 double bond CH2 plus यहाँ पर जो H plus है वो इसी के साथ में कोऑर्डिनेशन में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर्म हो रही है. सो इससे क्या होगा, जो डिफरेंट हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, दोज विल बी स्टेबलाइज्ड. सो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहीं से आती है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट फ्री रेडिकल्स. So let us consider a free radical like this CH3 CH CH3 and यहाँ पर एक radical है. So we can represent the radical like this CH3 then C CH3 and this is H and यहाँ पर एक sp3 ऑर्बिटल में एक radical फॉर्म हो रहा है. Now यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो बॉन्ड पेयर है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, अगर हम उसकी होमोलिटिक क्लीवेज को बताते हैं लाइक दिस, देन क्या होगा, यहाँ पर दो रेडिकल्स फॉर्म होंगे, we will get this structure CH2 radical then CH radical and यहाँ पर CH3 and along with this we will have H radical. Now यहाँ पर दो adjacent carbon के ऊपर एक एक free electrons present हैं, so these can couple up with each other and form a pi bond. CH2 double bond CH single bond CH3 and इसके साथ ये जो हाइड्रोजन रेडिकल है ये इसी के साथ में ही प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है. सो दिस इज द हाइपरकॉन्जुगेटिव इफेक्ट इन ऑर्गेनिक रेडिकल्स. नाउ जिस कार्बोकैटायन या फिर जिस रेडिकल में जितने ज्यादा हाइपरकॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी. सो दीज हाइड्रोजन्स, ये जो हाइड्रोजन्स हैं जो कि हाइपरकॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दीज आर हाइपरकॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन्स. या फिर अगर हम देखें जिस कार्बोकैटायन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसी के नेक्स्ट कार्बन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो उसी का जो नेक्स्ट कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन और उसके साथ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है दोज आर अल्फा हाइड्रोजन्स. सो स्टेबिलिटी
is directly proportional to hyperconjugative effect, and we can also say stability is directly proportional to number of alpha hydrogens. All right. So this is hyperconjugation for organic intermediates. Now let us talk about the stability of alkenes. Stability of alkenes. So let us say हमारे पास एक alkene present है like this CH3 CH double bond CH then CH3. तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है हम उसको थ्रू p ऑर्बिटल्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं like this. These are the p orbitals and these are bonded to each other through pi bond. Now इसके adjacent कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो क्लीव हो सकती है by heterolytic cleavage and this electron pair can shift over here. So we will get this structure CH2 negative then CH double bond CH then CH3 and इसके पास ये H plus present है. So this is the H plus. Now ये जो negative charge है this can shift and this pi bond can shift over here so that we will get another structure like this CH negative or here we will have CH2 double bond CH then CH minus and then CH3 and यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसी के साथ में ही प्रेजेंट है in coordination and so this is the hyperconjugation of alkenes. So alkenes में जितने ज्यादा hyperconjugative hydrogens present होंगे उसकी stability उतनी ही ज्यादा होगी. So stability is directly proportional to number of alpha hydrogens. All right. Now let us talk about the next effect, that is ortho or para directing nature of alkyl benzene. Alkyl benzene. So alkyl benzene में क्या होता है, ये बेंजीन रिंग होता है और इसके ऊपर एक alkyl group present होता है. Let us say we have CH3. So CH3 में क्या होगा, here we have this aromatic system and यहाँ पर CH3 group present है. तो CH3 group को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 and then hydrogen. Now ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है this can shift to carbon and we will get this structure. We have CH2 negative and H positive and then यहाँ पर pi bonds present है. So this negative charge can come over here and this pi bond can shift so that we will get this structure. So here we have double bond CH2 and negative charge in pi bond. So यहाँ पर pi bond present है. Then this negative charge can go over here and this pi bond can shift so that we will get the structure CH2 pi bond and negative charge and then ये pi bond ये negative charge भी further delocalize हो सकती है like this and we will get this structure CH2 negative charge pi bond and pi and then further ये negative charge CH2 के ऊपर आ जाएगी like this. So here we have CH2 negative pi bond and pi. Alright. So यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो नेगेटिव चार्ज है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी जो कि एज अ नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है वो इस रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो रही है. सो लेट अस
name these structures as 1, 2, 3, 4 and 5. So as we can see in structure 2, 3 and 4 जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर प्रेजेंट है. इन स्ट्रक्चर 2, 3 and 4 negative charge is on ortho and para position. So अगर अल्काइल बेंजीन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड होती है देन वो इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है और नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में प्रेजेंट है. इसीलिए ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन in alkyl benzene electrophile is added to ऑर्थो और पैरा पोजिशन. ऑर्थो और पैरा पोजिशन. सो ये है हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट का और एक significance. This is the required answer and I hope you understood the concept well. Best of luck.